Hello students, myself Professor Hiral Bausar from Rafael College, Vapi, and I am going to teach you subject environmental science. In the last session, we discussed the energy flow of ecosystem. Then we discussed the types of biogeochemical cycles in which we discussed first one water cycle. Second one, carbon cycle. There are total 6 cycle in your syllabus: water cycle, carbon cycle, oxygen cycle, nitrogen cycle, energy cycle, and last integration of all the cycles, in which we have already discussed the 2 cycles. In today's session, we discuss energy cycle. So let's start energy cycle. The energy cycle is based on the flow of energy through the ecosystem. एनर्जी साइकिल किस पे बेस्ड है? वो एनर्जी पे बेस्ड है. और एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो सनलाइट से मिलती है. द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कन्वर्टेड बाय द प्लांट्स देमसेल्व्स इनटू ग्रोइंग अ न्यू प्लांट मटेरियल which include the leaves, flowers, fruit, branches, trunks and roots of plants. एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है वो कन्वर्टेड होती है कैसे? बाय द प्लांट्स देम सेल्फ इनटू ग्रोइंग न्यू मटेरियल, न्यू प्लांट मटेरियल. वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो क्या कहते हैं? अपने लिए खुद का ओन खाना बनाते हैं, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो वो क्या करते हैं? तो उससे क्या होता है? तो वो लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ब्रांचेस, टंग्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स बनाते हैं खुद के लिए, खुद का ग्रो करते हैं. सिंस plants can grow by converting the sun's energy directly into their tissues, they are known as producers in the ecosystem, right? There are the three main components in the ecosystem, that is the producers, consumers and decomposers. The producers who made their own food, that is called the producers, autotrophers, and consumers who are depend on the producer, right, they are called the heterotrophers. and decomposers जो producers और consumers dead हो जाते हैं वो खाते हैं, उसे बोलेंगे हम decomposers. ओके, चलिए. द प्लांट्स आर यूज्ड बाय द हर्बीवर्स एज अ फूड, दैट इज द कंज्यूमर्स, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स एज अ फूड विच गिव्स देम द एनर्जी. प्लांट्स कौन खाएगा? तो वो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स खाएंगे, हर्बीवर्स, उनके लिए खाना होगा वो, तो उससे उनको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. द लार्ज पार्ट ऑफ दीज एनर्जी इज यूज्ड अप फॉर द मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ दीज एनिमल्स सच एज breathing, digesting food, supporting the growth of tissues, maintaining the blood flow and body temperature. तो ये जो हर्बीवर्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स, ये क्या खाते हैं? ये प्लांट खाते हैं. तो ये खाना, ये फूड से उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. वो एनर्जी क्या है? वो कैसे मिलती है वो एनर्जी? तो एनर्जी मीन्स मेटाबॉलिकली फंक्शंस ऑफ such as breathing, digesting food, supporting the growth of tissues, maintaining the blood flow and the body temperature. Energy also used for activities such as looking for food, finding the shelter, breeding and rearing the young ones. Then carnivores, the herbivores, that is the first order consumers, जो plant खाते हैं, जो प्लांट से उनको एनर्जी मिलती है. नाउ कार्निवर्स, कार्निवर्स कौन है? जो हर्बीवर्स को खाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स को. कार्निवर्स, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स. द कार्निवर्स इन टर्न डिपेंड ऑन द हर्बीवर्स ऑन विच दे फीड. Thus, the different plant and animal species are linked one another through the food chains. Producers को कौन खाए? प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खाते हैं. कंज्यूमर्स आर क्लासिफाइड एज 4 कैटेगरीज: फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड द हर्बीवर्स हु फीड ओनली द प्लांट्स. सेकेंड ऑर्डर, हु आर नोन एज द कार्निवर्स हु फीड द हर्बीवर्स. थर्ड ऑर्डर, दैट इज
टर्शरी, राइट, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स जो कार्निवर्स को खाते हैं. देन फोर्थ ऑर्डर दैट इज द ओमनीवर्स, राइट. द फोर्थ ऑर्डर जो क्वार्टररी कंज्यूमर्स जो कार्निवर्स को खाते हैं, जो कार्निवर्स को खाते हैं, राइट. सॉरी, हर्बीवर्स को खाते हैं, जो जो जिनको कोई नहीं खा सकता लेकिन वो सबको खाते हैं. दैट इज कॉल्ड द फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर. सो एनिमल्स एंड स्पेसीज and plants are linked with one another through the food chain. Each food chain has 3 or 4 links. However, as each plant or animal can be linked to several other plants or animals through the many different linkage, these interlinked chains be depicted as a complex food web. This is thus called the web of life, that show that there are the thousands of interrelationship in the natures. Food chain में क्या होता है? That first plant that is the producer, जिनको कौन खाएंगे? कंज्यूमर्स. और प्लांट वो डेथ हो जाए वो कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स, राइट. ओके, तो ये तीनों हमारे मेन कंपोनेंट है इकोसिस्टम से. तो ये हमारा साइकिल होता है इकोसिस्टम का. अब फूड चेन क्या होता है? फूड चेन में फर्स्ट क्या होते हैं? प्लांट को कौन खाएंगे? प्लांट को खाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, जिसके अंदर आते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स. तो ये हो गए फर्स्ट ऑर्डर को कौन खाएगा? सेकेंड ऑर्डर को कौन खाते हैं? थर्ड ऑर्डर. और थर्ड ऑर्डर को कौन खाते हैं? फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर्स. ये है हमारी फूड चेन, जिसे हम बोलेंगे वेब ऑफ लाइफ, फूड वेब बोलेंगे, राइट. प्लांट को कौन खाएगा? फर्स्ट ऑर्डर दैट इज दी रैट को कौन खाएगी? सेकेंड ऑर्डर कैट. फिर उनको कौन खाएगा? स्नेक. एंड फोर्थ ऑर्डर लास्ट में आएगा. स्नेक को कौन खाता है? वुल्फ. और वुल्फ को कौन खाते हैं? टाइगर और लायन. दैट इज दी फूड चेन. ओके, दैट इज कॉल्ड दी फूड चेन. दैट इज कॉल्ड दी एनर्जी, फूड एनर्जी. ओके, राइट. सो for today's session, it is completed. In next session, we discuss the another one cycles. Till then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye. Thank you.